Hello dosto, welcome back to day 4 in Manali, and especially this video is part 2 of day 4. Part 1 में we visited Vaishnav Mata का temple, International Road Rich Memorial and many more things. If you haven't seen that video yet, I highly recommend you to watch it after this video. अभी हम जा रहे हैं जगतसुख और इन गांव के रास्तों में से जाते हुए आपको एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट सा फीलिंग आएगा और ये नज़ारे एंजॉय करते करते आप बहुत ही जल्द जगतसुख पहुंच जाओगे. Jagatsukh village is the former capital of the state of Kulu, located about 7 kilometers away from the town of Manali. Jagatsukh now is an ordinary village on the Nagar Manali Road. It was once the power center of the entire Kulu region. It is famous for its natural landscape and the ancient Jagatsukh temples, which are religiously important shrines. Legend has it that this temple was built by the Pandavas. The temple surely is very old, but at the same time very artistic. Definitely a must visit if you are planning a trip to Manali. After seeing the temple, we are now at this local sweet shop which was serving steaming hot momos which were absolutely delicious. So अभी दर्शन हो गया, खा भी लिया and we are heading back to our taxi. और इसी के साथ हमारी जो नगर कुल्लू ट्रिप चल रही थी वो हो चुकी है ख़त्म. Now we are heading back towards Manali. This little trip was spontaneous but definitely worth it. I would highly recommend you to do this trip. It's like a little detour from the regular spots which you visit in Manali. चलो जी, पहुंच गए हम अपने होटल हाईलैंड. 5 बज चुके हैं टाइम एंड थोड़ी सर्दी लग रही है मुझे. सो हम अभी रूम में जाएंगे, रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद मे बी मॉल रोड जाएंगे. 1 hour later. तो अभी टाइम हो चुका है 7 और हम लोग रेस्ट करके अभी निकल रहे हैं मॉल रोड की तरफ. तो अभी जी यहाँ पर हम लोग रिक्शा नहीं मिल रहे इसलिए अभी चल के ही जा रहे हैं नीचे. बहुत ठंड है लेकिन मज़ा आ रही है. यहाँ से चल के जाने का और एक मज़ा है. ओल्ड मनाली के नज़ारे कितना सुंदर दिखता है यहाँ से ओल्ड मनाली. A few inches later. Welcome to one of my favorite places in Manali, the Mall Road of Manali. As I said before in my videos, this place just comes alive at night and is absolutely beautiful. Shops bustling with customers, food stalls everywhere. You get to meet different types of people here. So I ended up buying one of these because I absolutely love it. Tried some local chicken momos over here which were very fresh and very tasty. Later tried a local dish here called chicken thukpa. It was very spicy and steaming hot, but इतनी ठंडी में यहाँ पे ये खा के मज़ा आ गया. After some light shopping, taking parcels and watching North, the dog right now in front of the screen for a while, it was time to head back to our room and leave Mall Road for today. While going back, we took a taxi because we got it at the rate of a rickshaw fare. I had a few questions on my previous videos that how are the local people over there. As per my experience, the local people here are really very nice and very friendly. तो आ गए जी हम लोग वापस अपने होटल हाईलैंड. गरम गरम मोमोज और थुक्पा खा के एंड बॉडी बहुत गर्म हो चुकी है. आई बॉट दिस ऑल्सो एज अ मेमोरी ऑफ मनाली. वैसे तो हमें गोवा में इतना यूज़ नहीं होगा ये, बट स्टिल एज अ मेमोरी ऑफ मनाली आई बॉट इट. एंड
यहाँ पे एक्चुअली अभी चल रहा है -6। टाइम मैंने इसलिए देखा क्योंकि आप लोग के लिए बोलना है, बट फ़ोन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा यहाँ पे वेदर का। एक्चुअली चल रहा है -6। तो या टाइम इज़ अबाउट 11 PM एंड या इफ़ यू फाउंड टुडेज़ वीडियो फनी, enjoyable, informative, whatever, प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अभी तक नहीं किया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन टुमारोज़ वीडियो। कल भी हम थोड़े बहुत प्लेसेस करेंगे मनाली में, और कल का वीडियो मेरा आखिरी वीडियो रहेगा मनाली में। उसके बाद द ट्रिप वुड कंटिन्यू बट टू अ डिफरेंट सिटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर and peace out. Good night. Bonus! Do we have time for bonus meat? Let's investigate. Sorry, we didn't have time for bonus meat. Perhaps next time you will be more lucky.